So hello students, in this video we will talk about ideal and non-ideal solutions. So as the binary liquid solutions which we discussed in our previous videos, they are classified on the basis of the Rolle's law. Rolle's law also we have studied in detail in the previous videos. So जो binary solutions हैं, liquid solutions हैं, उनको हम liquid solutions की बात कर रहे हैं, हम उनको हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ. सो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस हैं. देखते हैं वो कैसे हम रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस को आइडियल और नॉन आइडियल में कैटेगराइज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट आइडियल सॉल्यूशंस. सो सॉल्यूशंस विच ओबे रोल्स लॉ over the entire range of concentrations that are known as the ideal solutions. So simply जो solutions Rolle's law obey करते हैं, जो हमारे पास Rolle's law का expression है कि मोल फ्रैक्शन के साथ कैसे उसका वेपर प्रेशर चेंज होता है. सो जो भी उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंगली क्या वो फॉलो करते हैं लॉ को या नहीं करते हैं. जैसे अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. सो क्या वो ओवर द एंटायर रेंज की जैसे जैसे कॉम्पोजिशन चेंज होती है वैसे वैसे वो जो द वेपर प्रेशर है दैट रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, वेदर इट इज़ देयर, वेदर द लॉ इज़ फॉलोड और नॉट. सो द सॉल्यूशन विच फॉलोज दैट लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसनट्रेशंस का मतलब कि हम अगर मोल फ्रैक्शंस को की कंसनट्रेशन या कंपोनेंट की कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन चेंज करते हैं तब भी उसका वेपर प्रेशर जो है उस मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. दिस इज़ द मीनिंग. सो सिंपली अगर हमें डिफाइन करना हो व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, तो सिंपली द सॉल्यूशंस विच ओबे द रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस दैट आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. सो आइडियल सॉल्यूशन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास. For ideal solution, delta H mixing that is 0 and delta V mixing that is 0. So one by one देखते हैं what is the meaning of delta H mixing. So when we suppose we are having the two components A and B. So जब दो components को हम mix करते हैं, no heat एक्सचेंज दैट टेक्स प्लेस. जब दोनों को हमने मिक्स किया, एक कंपोनेंट को और बी कंपोनेंट को, तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुई. मीन्स नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड नोर इवॉल्व व्हेन दीज टू कंपोनेंट्स दे आर मिक्स टुगेदर. सो इट मीन्स मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि ड्यूरिंग मिक्सिंग इंथैल्पी चेंज जो है वो ज़ीरो है. सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, delta H mixing that is always 0, and another is that delta V mixing that is also 0 for the ideal solution. So what does it mean? That there is no change in volume on mixing. The volume of solution is the sum of the volume of the components before mixing. Suppose हमने A component जो है वो हमारे पास 50 ml है और B component हमारे पास वो भी 50 ml है, तो सम टोटल जो है आफ्टर मिक्सिंग जो है हमारे पास 100 ml होना चाहिए. अगर 100 ml से कम है या 100 ml से ज़्यादा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन दैट डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो मीन्स चेंज इन वॉल्यूम दैट इज़ ज़ीरो. सो ऑन मिक्सिंग thus whatever amounts of the two components are there after mixing, that is exactly the sum total of the volumes of the two components. So this is the meaning of delta V mixing. So ideal solutions that follows these two properties. For ideal solutions, delta H mixing is 0 and delta V mixing is 0. Next is that
why it happens, why there is delta H mixing, why that is 0, why delta V mixing is 0. Actually what happens when we mix two components, again we have taken the example of component A and component B. So when we talk about pure component A, so that will be having interaction between its own molecules, so that are known as AA interaction. Same way B component will also be having BB interactions when it is in the pure form. And when we mix these two solutions, obviously when we are mixing A and B, so A B interactions they develop on mixing. What will happen, the you can say magnitude of interaction between AA and BB, that is exactly or nearly equal to the AB interaction. So that's why there is no heat exchange during the mixing of these two components. So we can say that whenever one more thing is there related to the ideal solution or components of the ideal solutions, that they are almost identical in their molecular size, shape and have identical intermolecular forces, जिसके बारे में अभी हमने बात की, that is intermolecular interactions with AA BB interactions, they are nearly equal to AB interactions. So a perfectly ideal solution, you know that is rare. Some solutions are nearly ideal in behavior. Perfect ideal solutions milna, that is very rare, but there are solutions which are nearly ideal in behavior. So let's have some examples of such solutions which behave like that of the ideal solution. For example, first example is solution of n-hexane n-heptane. If we are mixing n-hexane n-heptane, that will become a ideal solution, not exactly ideal but nearly ideal solution. Same way benzene and toluene mixing, and then third one is we are mixing if ethyl bromide ethyl chloride, they are also behave like nearly ideal solutions. Next is chlorobenzene bromobenzene benzene xylene ethylene dichloride and ethylene dibromide. So next is methanol ethanol, if we are mixing, that also form the nearly ideal solutions. Then next is the stannous tetrachloride or carbon tetrachloride, if we are mixing these two, so they are, that is also forming a nearly ideal solution. So these are some examples which form nearly ideal solutions. So that's all about the properties, what are ideal solutions, what are their properties and what are their example. In next video we will study about the non-ideal solutions.